in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा. जी. तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. तो so we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then your lordship, eventually if your lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if your lordship looks at page 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ECP को? ECP को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ECP का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक जी, में. बिल्कुल बिल्कुल. ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और पुलिस से, आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये, उसका हमने जवाब नहीं दिया. नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें. जी, उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली. एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी के in all the newspapers actually published it. PTI इंट्रा-पार्टी पेज 16, PTI इंट्रा-पार्टी इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है. पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे. So that was also, the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये first का date खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे, हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो चुका हुआ था. अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नजर आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है. टाइम जो था वो 3 बजे का था. बट इन एनी केस ही वाज अलाउड इन टू कम इनटू द ऑफिस. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने.
کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے, وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن, وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن, اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سے. آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں, صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ سر پینل ہے نا جی. نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر, ہاں ایکسپلین نہیں کیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر. یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں, ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا. نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. نہیں, دو الگ الگ باتیں نا جی. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فور چیئرمین جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے جی جی, مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. secret ballot جی, ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ This is normal common sense. بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ ایک شخص نے مفروضہ کر رہا ہوں جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا جی, شیل بی الیکٹڈ. ان کو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو انپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا, تو
آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی, برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, ایگزامپل ہے. تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ, مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی, ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب جنرل الیکشن بھی ہوتا ہے نا, اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں سب ٹھیک ہے, but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it. کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا, اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا, آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی, کوئی بھی نہ ہو, آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا, پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا, یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبرشپ کے 8.5, جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں, صرف 10 ووٹ پڑتے, تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے, لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں, کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ, آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا, پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف, کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا, ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں, آپ نے ایک پینل بنا لیا, او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ, آپ نے کہا یہ بس یہ جی الیکشن ہو گئے, گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا, انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے, نہیں آپ بھی الیکشن دیکھیں, آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو 1 ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے to be honest I was elected unopposed. So I actually منسٹر کے لیے مجھے نہیں, وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے, 2 لوگ تھے, میں اور ایک طاہر صاحب. اچھا I did not know کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے سیکریٹری جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا کہیں گے, سلیکشن ہو گیا, کیا ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315, اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن, مطلب مسئلہ کیا تھا؟ چلو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو بابا کرا دو, پہلے کیوں نہیں کیا؟ آجو بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ, چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس, since we are talking about this, پیج 315 پہ ذرا دیکھیے, 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر, پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے, اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے, میاں نواز شریف پریزیڈنٹ unopposed, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ unopposed, ایس این اقبال چودھری سیکرٹری جنرل unopposed, etc. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed.
and on the next page نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی شاید وہ انپوز آ جائیں جی, مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں ورکرز ونگ کا ہیڈ وہ بھی انپوز آ رہا ہے. وہ 319 دیکھ لیجئے 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید آپ انپوز آ جاتے, مان لیتے ہم, کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے, آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. سو اٹس ناٹ انیوزول. 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں. عوامی نیشنل پارٹی کا ایون district presidents have been elected unopposed. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا, مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر الیکشن امپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اے پی کو بھی پروبیبلی کوئی پرابلم تھا, یا تو ان کو فائن لگایا کچھ, ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے, اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن, آج یہ آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں, سمبل آپ کو دے دیتے ہیں, ابھی فائن کر لیں. تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے جی. اچھا سر کمنگ دیکھیے, اب دیکھیں آرٹیکل 17 پارٹی فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہے, اس میں تو سمبل کی بات نہیں مگر پیسوں کی تو بات کر لی. وہ تو ہے, وہ کل ہم سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ 2014 سے وہ ایشو پہ بھی بات کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں آگے. مطلب دیکھیے اب اس میں دیکھیے ذرا آپ ایک اور اس میں پہلو ہے جو کہ بہت نازک پہلو ہے. ملک کون چلاتا ہے؟ ملک وہ سیاسی پارٹی چلائے گی جو منتخب ہو جائے, ٹھیک ہے. سیاسی پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ایک نام ہے. آپ کل اپنی پارٹی کا نام بدل لیں تو مطلب پارٹی تو وہی رہے گی نا. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو تو پتا تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے دشمنوں سے سودا تو نہیں کر لیں گے, کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہاں یار میں جانا پہچانا آدمی, چلو ہم یہ. بیچ ایک دو لوگ آپس میں کبھی ہو جاتی کھچ پچ, ہر پارٹی میں ہوتی ہے ایسی. مطلب جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب آپ کے دوسرے آج کل وہ تھے نا, ہم نے کھوسا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں, اب میں آپ کی پارٹی میں. ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں, ہوتی رہتی, مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں, چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں. مگر دیکھیے ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے, وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے, کہے گا جی یس سر. تو پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں, شاید یہ بہتر ہے, شاید وہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے, نہیں ایسے کرنا چاہیے, چلو بھائی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں, آئی ایم ایف سے نہیں معاہدہ کریں بھائی, چلو ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا, اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان, تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے, تو یہ باتیں کھڑی ہو جائیں گی نا. تو بھائی لوگوں, اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی. یو ریپرزینٹ می, you are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ٹھیک ہے جی, یہ والی بات ہے. صحیح. آپ کا دیکھیں سر, میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں. پرسنلی questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ, کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے, you're with me or not with me. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے we need to change that. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے, which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اچھی روایت ہے. I am arguing maybe
contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create. So I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. Right. I mean, I've never had, in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel, in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है. These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. बताओ, आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो. वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे, वो उस वक्त करते अकॉर्डिंग टू द पैनल. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है इज वन पैनल, वन प्रोविंसेस पैनल, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. किसी नहीं, पैनल कोई आया नहीं, तो फिर इलेक्शन नहीं हुआ. ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डिप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो वही कर रहा है होगा. वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज 1 पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्ने इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को? क्या मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स ऑफ ईसीपी पीटीपीटीआई. अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100.
جو اس رول کے مطابق چونکہ لکھا ہوا ہے کہ the federal commissioner shall declare the result of the concerned panel or chairman as the case may be to be notified at the polling venue after at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. یہ ایک رول 15 ہمارا تھا، تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروسیس کو جاری رکھا اور وینیو پہ کوئی 500-550 لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ کون سا پیج پہ آپ پڑھ رہے تھے؟ یہ پیج 100 سے. کون سے پارٹ میں؟ 101 میں ہوگا، پارٹ 1. ٹھیک، آگے بڑھیں. ٹھیک. سو وہ پھر سیکنڈ کو یہ ہوا، 2 دسمبر 23 کو اناؤنس کر دیا. The announcement was on the media and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 نہیں، لیکن ابھی جب یہ الیکشن جیسے ہو رہا الیکشن کرا لیتے بھئی. اگر اس وقت کووڈ بھی تھا اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس، تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے، اگر دیکھتے اب الیکشن کی ضرورت ہی نہیں، آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو، جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone، لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جانتا، میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم ان کو، اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے، تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی، یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے ممبران، میرے خلاف، وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی. مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس وقت جا نہیں رہا ہے کہ جی، تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے، آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی، مگر انہیں بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از، انہوں نے آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی، اور کوئی وہ نہیں دی، پینلٹی نہیں لگائی، کچھ نہیں، بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں، پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، نہ کوئی ای سی پی اٹھاتی بات. آئی ایگری. لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا، ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ، پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے، آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا، آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ، چیئرمین مسٹر حامد خان. جی ہاں کاپی دی. تو یہ انہوں نے یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے جس میں معراج محمد خان، عبد الحفیظ خان، سعید اللہ خان نیازی، محمود مرزا، فاروق، امجد میر، ڈاکٹر عارف الوی، نواب زادہ محسن علی خان، مسٹر اکبر ایس احمد، فوزیہ قصوری، خواجہ محمد جمیل، خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اور پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا، کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا، پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے جو میں نے کاپی لگائی ہم نے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں، اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کانسٹیٹیوشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے؟ ایسے ہی وی ڈونٹ ڈاؤٹ دیٹ. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے،
اب برڈن تو آپ پہ آ گیا نا, وہ یا تو ان کا ریزگنیشن لیٹر دکھا دیجیے ہمیں, یا ان کا دکھا دیجیے کیا ایک اخبار کی کٹنگ ہمیں نہ دکھائیے. نہیں سر وہ تو آپ نے کو دیکھا, میں آپ سے کل سے کہہ رہے تھے, تو یہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے, یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو الیکشن تو کر لو. جی شاید یہ بننا چاہیں چیئرمین, آئی ڈونٹ نو. ویسے میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, حامد خان صاحب کا زیادہ حق ہے چیئرمین بننے کا یا گور صاحب کا؟ نہیں آپ سے نہیں پوچھوں گا, خان صاحب آپ سے نہیں پوچھوں گا. اور حامد خان صاحب مجھے آپ پتا آپ کیا کہو گے, آپ کہیں گے ان کا ہے. ہاں آفر ہوئی تھی لیکن شاید ان کا یہی صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کچھ نہ کہیں. ہاں یہ ایسی آن اے لائٹر نوٹ, برا نہ مانے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بفور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی, ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹی پار مارے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں برے وقت میں بھی ہوتے ہیں, تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے, عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں, ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا, یہاں سے نہیں ملا, دوسرے میں چلے گئے بھائی, تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے, آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب وہ چلے کوئی اگر پارٹی اس پہ ہو نا سرکار میں, پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے, تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے. تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید, تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں, فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے, مگر اگر سمت اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ وے. یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. نہیں آئی کانٹ, بٹ I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشن آن اینڈ آف آل, جی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مطلب who knows what happens tomorrow. جی I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. چلیں. اچھا now so basically sir coming so I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3 نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3 جو ہے سر آف دا کانسٹیٹیوشن, وہ پرووائڈس کہ سورس آف فنڈ جو ہے not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3, do they have jurisdiction? جی they do. Under where, how do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3 read with Section 210. کون فیصلہ تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ سر these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme Court. وہ عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر, تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ ہی میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے سر.
every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. To whom? 2010 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ year. से पढ़ रहे हो? To section 210. नहीं, वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना? जी जी. तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है, तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है, लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर बिकॉज ये जो है जो 210 है that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2) के आपकी सोर्स ऑफ फंड्स है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं एक ऑडिटेड अकाउंट देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है, वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं, हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं है तो वो किस जगह दस्तक देगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है, तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये या तो आप एक पॉइंट आगे कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, जुरिसडिक्शन की और आईनी आइन की बात नहीं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ सो योर लॉर्डशिप विल सी दैट if your lordship turns to the election act itself, your lordship will see that there are various provisions in the election act where although election commission has been given jurisdiction under the constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the election act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void, and then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4,
the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झाड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो जैसे उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झाड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस. नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना, वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर. The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको enlist ही ना करे. फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द एनलिस्टमेंट. जी का मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान ली, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था. ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ ये बात सही है. मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, क्यों बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए. अब उसको इनकार अगर वो कहती मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है. तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी. तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना. 202 अगर आप देखें ये 5 जो हम पढ़े, एक मैं यही बात कर रहा हूँ. इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है. 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. ठीक है सर. तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया. उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया. नहीं सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी. आपका सर मेरा मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको. आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा? मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल. They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow that. Actions. Law allow नहीं करता. Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल. सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है. जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और हम आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मज़न नहीं नजर आ रहा है. राइट. So now I was just I'm referring to. ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है. या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना. तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी. टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे. अवॉइड इट, आई थिंक सो. आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल. सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154 156
all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ठीक है. Whether it's specifically provided, impliedly provided. चलें हम बात समझ गए आपकी. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is के under Article 17, the symbol, इसकी दो पार्ट है. Symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. जी. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे. जी नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए. जी अब ये आपकी बात मैंने जरा, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख्वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. मैं इस तरह पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी. नहीं, आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के, जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, फिर उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उस पे objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates, if we can find a solution with, if you give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. दूसरी चीज से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके जितने, you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी. Section 67(3). ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है,
الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے؟ نہیں الیکشن نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. یہ آپ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کر رہے ہیں یا ان کو آئیڈیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں یہ پتہ ہے ان کو سر. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. پوچھ لیتے ہیں مخدوم آپ صاحب کے سے. کینڈیڈیٹس کو سمبل کیا دیں گے پھر وہ؟ کچھ نہیں دیں گے سر. کوئی چھڑی ہوگا, کوئی جھاڑو ہوگا, کوئی فٹ بال ہوگا. وہ آپ کی مرضی, جو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے, آپ کو مجھے جلدی چاہیے. نہیں سر, اگر دے دیں گے کینڈیڈیٹ تو مخدوم صاحب کو بلائیں. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. There is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to simple statement دیجیے. Are you stopping them from contesting elections? These are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. نہیں ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. If PTI can field candidates under their symbol, نہیں سمبل تو انہوں نے وہ الگ بات ہے, مگر کہہ رہے ہیں آپ کو الیکشنز ہم نہیں روک رہے ہیں, ہم لڑیں الیکشن. how will the party fight the election in the air? تو نہیں ہو سکتا نا سر. کیا we can't fight election in the air نا سر. الیکشن ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ کیا آپ کے اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ یہ پریس میں کہ کوئی بھی سمبل کوئی دے دیں سمبل سے چلیں, یہ بھی صحیح ہے. I am willing with that also. میں نے دی ایک سیکنڈ. یہ پہلی بات, آپ کل الیکشن لڑنا چاہیں, سب جانتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. میں لڑ سکتا ہوں سر, بٹ I can't fight as PTI candidate. I can't fight PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, یہ دیکھیں, these issues are you raising before us which have not been determined. Sir, this is the effect of this symbol. اسی لیے تو میں ریکویسٹ اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ I am willing, I can contest under one symbol, any symbol. I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? نہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ الیکشن لڑیں. میں لڑ سکتا ہوں بٹ ناٹ PTI. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It's an entity. Suppose جی کل 10 کوئی اور پولیٹیکل پارٹی والے جا کے قبضہ کر لیں پی ٹی آئی پہ, وہ بن جائیں گے پی ٹی آئی. اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود. سر میں یہ سوال ہمارے سامنے پی ٹی آئی جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ, ایکس پارٹی جو بھی ہے, ایکس پارٹی وانٹس ٹو کنٹیسٹ الیکشن ایز اے پارٹی. So it cannot field a candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong. یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر, الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ, ایز انڈیپینڈنٹ نا سر. نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈز اٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے. دیکھیں نا, اب وہ پارٹی چھوڑ دے یا اس کے ساتھ وابستگی آپ کا شاید اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میرے پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئے گا, جیسے کہ آپ نے دیکھ کیا برابر میں کیا ہوا. سر دیکھیے آپ نے جو پارٹی ہیڈ کو ختم کیا ادھر, دیکھیں اب اپنا زمانہ بھی یاد تھوڑا کر لیں. جی ایک پارٹی تھی, پارٹی ہیڈ گیا, آپ نے سیکیور کر لی کوئی چیز, جی اور اگلے دن وہ صاحب کیسا ریزولوشن لیا ہے جی, کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں تھے جی, اس کا دیکھا آپ نے. مگر آپ اس کے بعد نہیں بات کرتے ہیں ان کے متعلق باتیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ اس کو اپنے لیے مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کا تعین کریں. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. سمجھ نہیں آ رہا ہے. I don't know. سر ہوگا یہ کہ let us جائے گا کینڈیڈیٹ جائے گا کہ میں اس پارٹی کا ہوں, سب کو پتا ہوگا. نہیں پتا نہیں ہوگا, سب کو پتا ہوگا. وہ تو آئے گا, ایک کینڈیڈیٹ آئے گا, لیٹ اس سے ایم این اے آئے گا
ایک چھڑی پہ, اس کے پاس سمبل انڈیپینڈنٹ چھڑی کا ہوگا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that. High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ قسم کا سمبل ملے گا. جی علیحدہ ملے گا. اچھا اب علیحدہ ملے گا تو لیٹس سے کہ ایم این اے ہے, اس کے پاس چھڑی ہے, اس کے نیچے پیپل. یہ we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67-3. آپ پوچھ لیجئے ان سے, الیکشن کمیشن کے بندے کو بلا لیں. مگر یہ باتیں آپ نے کہاں کی ہیں؟ یہ امپیون ججمنٹ میں اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے. امپیون ججمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں سر, میری پٹیشن میں تو ہے نا. نہیں, کہاں سے ہم یہ لے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں باتیں. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, میرا آرگومنٹ سن لیجئے. میرا آرگومنٹ کیا کر رہے ہیں جی. سب کچھ اچھا سوری. You need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he کمپیوٹر بھی اٹھا رہے, ڈاکومنٹس بھی اٹھا لے, چار ڈالے کلے چلے گئے. ابھی میرے پاس خبر آئی ہے میرے بھتیجے کو مارا ہے, بیٹے کو مارا ہے. دیکھیے نا, so he may have to go. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) کے تحت my submission is that the candidate becomes independent. یہ دوسری پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ Lordship remembers Article 63A, capital A, جس میں جو آپ نے through out the history of your Lordships. چودھری صاحب, nothing like this should happen if it is happening. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں. So your Lordship will see that 63A capital A, جس کو آپ ہماری سپریم کورٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ this is the bane of corruption in politics, کہ لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں. وہ ڈیفیکشن کلوز جو ہے 63A, جس پہ لوگ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ جو ڈفرنس ہے بٹوین انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, آپ ہی نے تو ختم کرایا ہے. اس کو مضبوط کیا سر. نہیں, ختم کرا دیا. ختم ہو گیا تھا. نہیں, آپ نے تو, آپ ہی کی تو پوزیشن تھی. میری آرگومنٹ تو اس سے اسٹرانگ ہوا ہے سر. نو, آپ ہی نے تو یہ چیز ختم کی جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے. کس نے ختم کر دیا پارٹی ایٹ کا کانسیپٹ؟ آپ ہی کی تو پٹیشن پہ ہوا ہے. سر میری پٹیشن تو یہ تھی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج اس طرف کروں گا کل اس طرف چلوں گا. نہیں, میری پٹیشن تو یہ تھی سر کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے. آپ اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, میں الیکشن سینٹ کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. وہ جو ایک پارٹی سے منسلک لگتے وہ کہاں چلے گئے, وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آپ کی پٹیشن تھی, نکالیں وہ کیس. وہ آپ ہی دیکھیں, وہ آپ کے خلاف جائے گی بات. آپ ہی کے کیس پہ ہوا ہے سب کچھ. تو جو کل Lordship is referring to which case وہی ہوگا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا مگر وہ بٹ میرا پوائنٹ یہ سر کہ what I'm trying to say here is کہ سمبل جو ہے is something that if you take that away, my submission is کہ پارٹی ڈسفنکشنل ہو جاتی ہے. پارٹی cannot contest the election. یہ میں کہہ رہا ہوں. ادھر آئیں. اینڈ اس پہ سر I now will come to that case جس کی میں بات کر رہا تھا 5089 سپریم کورٹ. نہیں, آپ کو دیا. I understand. آپ نکالیے کیس, ان کو تو نہیں دینے کو کہا ہے. جی میری کتابیں جی. Your Lordship will see کہ جس طرح میں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا آرٹیکل 17(2) تو کہتا ہے سمپل اسٹریٹ فارورڈ کے رائٹ ٹو فارم اے پولیٹیکل پارٹی, لیکن there are number of penumbra rights that are attached with it. Penumbra rights have been developed robustly by our courts. اور جو پہلا کیس اس پہ تھا, Your Lordship will note, was Madhudi's case. Your Lordship was referring to history.
So the first case on this was Maulana Maududi's case, and your Lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right to function and operate as a political party. Now, your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your Lordship can turn to page 734, or your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being suppressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो accounts हैं, एक और भी law आया सर, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि accounts जो हैं वो audited accounts, ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी, एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 Supreme Court 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें, नहीं पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, और जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मैं तो अभी आपको 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, इफ योर लॉर्डशिप look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that?
اور تھوڑا سا اسپیڈ کر لیں جی سلو ڈاؤن ہو گیا جی. Your Lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling Your Lordship, I'm submitting before Your Lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. آپ سمبل آپ کا ٹیک اوے نہیں کر رہا تھا الیکشن کمیشن. کمیشن آپ کو صرف کہہ رہا تھا کہ الیکشن کر لیں پلیز. اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آپ نے کہا کہ الیکشن تو چھوڑو, سمبل کی جنگ کر لیتے ہیں. مگر ان کا اعتراض آپ کے سمبل پہ بالکل نہیں ہے. وہ نہ آپ کا سمبل لینا چاہ رہے تھے, وہ صرف کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کروا لیجیے اپنی پارٹی میں, وقت گزر گیا بس. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا سمبل لے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سمبل دیں گے نہیں. میری انہوں نے آرگومنٹ, مگر ان کا تو جہاں سے بات ساری شروع ہو رہی ہے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن ہو گیا, وقت ہو گیا, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سمبل لے لیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا مگر سمبل برقرار رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے سمبل لینے والی, جو انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, قانون اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا. یہ کرایا سر, کرایا انہوں نے, میں دکھایا. دیکھیے ان کی جو انگزائٹی تھی الیکشن, وہ کہہ رہے تھے بھائی الیکشن کرا لیں ختم. سر وہ تو دیکھیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے آپ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. میں نے الیکشن کرایا, وہ نہیں مان رہے. کدھر اس الیکشن کرایا آپ نے؟ وہ آپ کو I showed the documents to your lordship کہ this is what I have. پہلا والا جو کس تاریخ کا مئی جو میں کر رہے تھے, اپنی گورنمنٹ تھی, وہ کب آیا تھا لیٹر میں؟ مئی میں. سر وہ تو انہوں نے اس کو قلعدم قرار دے دیا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے نا, وہ اسی کی کڑی چل رہی ہے ابھی تک. کڑی نہیں, ابھی تو اس وقت we are talking about the last election جس کے اوپر انہوں نے وائلیشن کا سمبل دیا. اب تو وہ کہیں گے نا اب تو ہم نے سر پکڑ لیا. سر بٹ سر پکڑنے کے لیے بھی they need the law. اب جب یہ جو ریسٹرکشن ہے سمبل والی, دیکھیں پھر آپ بحث کیجئے کہ ہم الیکشن نہ کریں یا کریں, ہماری مرضی, آپ مت ہمیں انٹرفیئر کرو. پھر بھی ہم نے الیکشن سمبل کے اختیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمبل از پارٹ آف مائی fundamental right. It cannot be taken away through an implied. دیکھیے کل بھی وہ مخدوم صاحب کی ہمیں بات یہ ہم لوگ سوال ان سے کر رہے تھے کہ جی ایک دفعہ الیکشن ہو گیا پھر باقی چیزیں فورن پلیس کرتی ہیں, وہ سرٹیفکیٹ دیا نہیں دیا, دیر سے دیا وغیرہ, سمبل, یہ سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو, میں دکھا دیا آپ. مگر بنیادی بات پہ آپ چلے جائیں, الیکشن والی بات. الیکشن ہو گیا سر, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اس میں ارریگولرٹی تھی کہ نہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کو اگر ہم الیکشن ہو گیا کی بات آپ کر رہے ہیں تو الیکشن میں نے کرا دیا. کوسچن از نہیں, دیکھیے اس پہ ہماری دو رائے نہیں ہے. وی اگری ود دیز ہم جانتے ہیں ججمنٹس. These are important. اس میں why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide کہ آپ سمبل لے لیں, can it be interpreted in that way? کیونکہ آپ ایک سینیریو دیکھیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے 2 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ ووٹرز یا سپورٹرز ہیں. اب ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے نامینیشن فارم نہیں ملے, اور اس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پوری پولیٹیکل پارٹی کو میں سمبل سے ہٹا دیتا ہوں, اس کو الیکشن ہی لڑنے دیتا. تو ان ایفیکٹ امپیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ 9 کروڑ لوگوں پہ, کیونکہ وہ 9 کروڑ لوگ جو ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی آرگومنٹ کو الٹا کر سکتے ہیں. وہ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے بھی نہیں ملا, 13 لوگوں کو بھی نہیں ملا, ایک نامینیشن پیپر دکھا دیں, ایک 50,000 کی جو فیس ہے وہ دکھا دی جمع ہوئی, یہ الیکشن بوگس الیکشن تھا, الیکشن ہوا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں چند لوگوں نے 9 کروڑ لوگوں پہ قبضہ کر لیا. وہ یہ آرگومنٹ تو میری بحث نہیں ہے نا, آئینی قانونی آرگومنٹ is only on Article 17. تو یہ وہ بھی کریں گے بات, یہ آپ بھی کریں گے. ہاں میری آرگومنٹ از آن Article 17 سر. جی میری سبمیشن سمجھ گئے آپ کی بات. کوئی نیا پوائنٹ بتائیں نا اگلا.
So point hum samajh gaye, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे. एंड आर्टिकल 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ. हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एस्ट से नॉन एक्सिक्यूटरी कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड. मेरा जजमेंट था. अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. ओके मैं समझा कोई और जजमेंट जी. तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूं बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट ही नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 Supreme Court 366. जी sir. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented, and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept
And as a consequence of it, you managed to get certain results which you did not have. ابھی ہمیں باتیں کرنا نہیں چاہیے، مگر آپ دیکھیں یہ اصول جو ہوتے ہیں نا sometimes یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں. اس وقت نظر انداز مت کیا کریں. اس وقت آپ نے نظر انداز کیا, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ٹھیک ہے, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سر. ہسٹوریکل نہیں ہے تو آج کی تاریخ ہے, یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. دیکھیں نا یہ جو یہ آپ یہ جو بار بار یہ جو لیول پلئنگ فیلڈ پہ ادھر بھی ذرا دیکھ لیتے, پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ان دا گائز آف لیول فیلڈ. ابھی آپ کو منت سماجت کر رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, بس اتنی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو سکتا ہے سارے ہوں کانسیکوینسز. بھائی اب ایک تو وہ ہم کیا کریں, اس کا ہم نے تو نہیں کیا, نہ انہوں نے کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا اس طرح سے. ان کا کہنا یہ ہوگا میں کیا کروں اگر آپ قانون پہ عمل نہ کریں, میں کچھ نہ میں دیکھتا رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہوگا. دیکھیے اب میں نے پوری بات کر لوں. دھرنا کیس میں انہوں نے آ کے موقف لیا, کاسمیٹک ہے قانون. جو بات آج آپ کر رہے ہیں, آپ نے خود اس کا ریویو فائل کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کے قوانین کا کہ کاسمیٹک ہیں. انہوں نے بھی فائل کی ریویو, انہوں نے وڈرا کر لی. آپ بھی آئے ریویو میں, آپ نے بھی وڈرا کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ بات کاسمیٹک تو نہیں رہی پھر قانون میں. اب اس وقت کی باتیں ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. دیکھیے یہ اب الیکشن سے مجھے لگتا ہے, اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہو رہا تھا یہ آپ کی مخالفین, اب یہ آپ سیاست میں جا ہی رہے ہیں نا, آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے دوبارہ فریش الیکشن کرا, آپ نہیں کرائیں گے. پھر ہاؤس ڈیزالو ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیزالو. دیکھیے آپ نے وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ادھر, یعنی کیسے کیا صدر نے آن دی ایڈوائس. مطلب دیکھیں یہ وہ صرف مانگ رہے تھے الیکشن کرا لیں, آپ نے کہا نہیں کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا الیکشن نہیں کراتے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں. پھر یہ جمہوریت ہے, یو ون سم ٹائم, یو لوز سم ٹائم, بٹ پرنسپلز شوڈ بی سسٹینڈ. یو کانٹ کیپ شفٹنگ. بھائی فرام اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں, وہ وجودین صاحب بھائی اصولی آدمی تھے جہاں تک مجھے, ہم سب مانتے ہیں ان کو. وہ الیکشن وہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. مطلب الیکشن کا مسئلہ کیوں ہے صرف آپ کی پارٹی کو, باقیوں پارٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو صرف ہمیں بہت وجودین صاحب تو آپ ہی نے چنا تھا نا, ان کو ہم نے تو نہیں چنا تھا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں بڑی اچھی بات ہے کہ the principles should stand the same whatever the situation. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کیس کی, اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کے بعد آپ کی پارٹی لائی کہ الیکشن ہو, پھر آپ نے پھر آئین بدل دیا, پینل سسٹم لے آئے, خیر وہ الگ بات ہے. مگر تو وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان the پنجاب اسمبلی سچویشن came, the things reversed. Absolute power corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should میرے پاس بھی absolute power تھا, میں نے کہا نہیں, مجھے چھوڑ دیں, ہمارے دو اور دو کے ساتھ چلا جائے. I was surprised. تو absolute دیکھیے, I was surprised in fact, بلکہ اوپر والے کی I was thinking کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو اب میرا موقع آ گیا ہے. But your lordship. چلیے خیر کوئی آگے بڑھتے ہیں. جی. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 73. اور جو اس پہ اسی سیٹ میں جو چوتھی ججمنٹ ہے سر, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. جی, اور اس ججمنٹ بھی, this is Nawaz Sharif judgment. So almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and have some point in time come paying for Article 17(3). اور اس کیس میں بھی سر اگین بہت ایلیبریٹ ججمنٹ ہے جس میں پنمبرا رائٹس کا ذکر کیا, اور بار بار یہ کہا کہ اس میں ایک نیا کانسیپٹ بھی لے آئے سر
and that was of political justice and political rights. And वो concept लेके आया from the preamble of the Constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17. और political justice का preamble में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I have done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई, जो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे, वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे, पावर दिए हैं, अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आप या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है. सिर्फ वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी. हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक. No, I'm not. This is the second, third point, sir. This is now a very important point for me. It says, what my point is this. 215 subsection 5 में उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग. So that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को. फिर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं. चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है. 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है. हाँ बता दें. प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोर्ट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. A court of law can be abolished by law.
statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil Article dispute. 219 Constitution का जिसमें power delegate होते हैं, such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament. जी ये आपने पढ़ लिया. Election Act 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं. मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ. I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा. It will have its own jurisdiction. They'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है. to the extent of general election. एक्ट to the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी जुरिस्डिक्शन को हो सकती है. मतलब नीचे बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा अब रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और सब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं. योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस. जब वो अभी चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी. क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसी कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं सिर्फ we are hearing आप नहीं देखिए ना, फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई, वकील, अभी हमने कहा ना, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. आप अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ आप प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ. has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And इस केस में कोई प्रॉपर ट्रायल हुई भी नहीं. ये तो समरी मैटर में
समरी प्रोसीडिंग्स में कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया. They just decided their hearing हुई, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक प्रॉपर ट्रायल करें if they have the jurisdiction, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी Sir, my next point was, a point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चलेगा, ये इसका जवाब देते हैं. जी मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी. सवाल पूछा. हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी ICA हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद PTI और एनी ऑफ द पीपल हेयर. वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं. वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी. होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल. बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो PTI. मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, PTI की नहीं है ये बात. डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है. तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया. फिर वो तो PTI लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है. नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा. अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया. उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है. वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू मगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया. वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी. बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चले उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी जो 2 पिटीशन उसकी बात थी. जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करा दे दिया उन्होंने जी. हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग. हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में. जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पेशावर कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पेशावर. वो लिस्ट नहीं लेके गए. दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड. दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस. दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड. उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ECP ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने. सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट. नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी?
सर कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई। पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? ना व्हाई, बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So अगर परेशान के होते तो आप परेशान चले जाते. I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट. सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन. जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया. सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन. बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. जी it was. और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया. So pending तो है ना? Pending है. We intend to withdraw that because it has become infructuous. But that अगर जब लगता है तो we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था. नहीं वो other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं. ये WP वो I think I don't know why. नंबर बताता हूँ आपको. 8117120223 which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें काउंसलर हैं. If my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी. अब WP 1171 का बताइए. एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन. जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी. और एक है सर 3-4 है ना. एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं. वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर. वो आइडेंटिकल नहीं है इसके. दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop you from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Makhdoom Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine कि you want to continue. जैसा जवाद साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ लगाई शायद नंबर देखो.
आगे सर, अब आगे आज जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में हैं. But if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. No, he's not conceding. He is contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So my submission is this: on that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. नहीं, कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा आप जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time in with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा हूँ. मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाएं. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दे. मैं आपको रेलेवेंट है, मैं रेलेवेंट बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट. जी इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड वन लाइन. को ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं, वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी. वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं, to me each high court is a supreme court of that province. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter
and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say Suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ जी. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, इलेक्शन तो इतना हर इलेक्शन होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं reject, same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in but 3 you can't go to Peshawar. Supposing I'm Pushab से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा. तो मैं कह रहा हूँ territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं. Sir, या उनका एलिगेशन होता है कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है. मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दी, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत जबरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहां के लोग खुश नहीं, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party है सर उस केस में पेशावर वाले. यही तो issue है. He's a party in the Peshawar High Court. That's the question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that was challenged. Party. जी. Après vous, क्या है French में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He's the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपकी ये बात हम समझ गए, मगर उनका objection ये था. चलिए मैं समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. जी. Now, sir, moving on. 645 पे. नहीं हम अपना काम करें, आप बताएं जी. बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था, I can multitask. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें, जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड, वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट, वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं, वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं, आप तो हैं ना सर. आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें? वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I am very. ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे जी. उसकी पार्टी कौन है सर?
ये तहरीक इंसाफ through its Secretary General Umar Ayub Khan. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता, या तो say he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो, हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे versus election commission. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें, आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. So we have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं declaration with regard to their order election commission का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं, ठीक है, पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. हाँ तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं जी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई सेड कि इसको मैं आप उनकी बात मान लेते, कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी, देखिए आप ये सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है. तो ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. तो मैं देखें सर, मैं कौन गया पेशावर? बिकॉज Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये. अच्छा, और ये जो आप अभी कर रहे थे सर, you see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं, या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा, and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते ना. लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं, ये बताएं. लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी. तो फिर वहीं रहते ना आप कहते जी मैंने करा लिया, लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी. हाँ, कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी. नहीं, वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन. ये बात है. ये मुझे देखिए, ये आपके पास है कि आप कहाँ जाएं. Nobody can force me to go anywhere. We agree with you. Yes. But so I am not going to pending. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was entitled to go to Peshawar. Your petition tomorrow. Ji. The Lahore High Court 5 judges say that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन. नहीं, अब तो सर देखें. नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन if I persist, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला. if I persist with the case and this thing नहीं है. अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो उसमें देखिए, उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. जी, कोर्ट कहे कि जी नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था. ठीक है, उसका क्या मतलब होगा? वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की. खुद इलेक्शन सही हो गया तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे. या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो आप फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशंस ऑर्डर इज सेट असाइड, आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. I will not be at all. That would be very great. Question of law. जी. So that is why I'm saying that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view? नहीं, we challenged it. नहीं, तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया. जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया. नया बना दिया सर, because of that.
So I mean question में समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे. अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी. फिर So that is what I'm saying. आपने बताया था ना कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म. गौर साहब कह सकते हैं, लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हम कहेंगे नहीं. फ्रॉम व्हाट आई नो, नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी. लोगों का कुछ पता नहीं होता है. आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का. बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा. इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटेंगे. वो कहते हैं कि मैं नहीं. चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है. पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल. यू कांट हैव री इलेक्शन फॉर अ पैनल. तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा. दैट्स राइट. If he doesn't, then he doesn't. Okay. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोले? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one कि intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना, इसलिए चलें आप ये कह सकते हैं. नहीं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराए ही नहीं है. दिखाएं उसका जजमेंट. यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई. प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें, जिस तरीके से भी कराना है करा के खत्म करें. और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये. आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया. इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है. हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है. इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी. इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन. ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ. रूपा के तहत, पुराने लॉ के तहत. चलें वो आप नहीं पूछ रहे हैं. दैट इज नॉट द इशू. नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा जजमेंट है, बताएं ना. वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाएं सर. कौन सी बात? हाँ इसी पेपर बुक में इनकी पे लगाया पेपर बुक में. मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक. मैं अभी है 853. मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा था. जी बता दीजिए. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched
an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के कोई चेंज नहीं इसमें. चेंज तो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने. ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं. बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर, ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग. उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी? कैसे पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद. सो ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है. सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नहीं तो इसको कोई नोटिस वोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई. वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ. These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Muntaz Akdas Guraya, wherein the petition, the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया. एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड. नहीं, मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में वो होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त. ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये जी. पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत हुआ है. देख लें जरा प्लीज उसमें. जी जी इसके तहत हुआ जी उसके तहत. इट इज चलिए खैर, आई कांट फॉलो दिस जी. So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan ने अपने ऑर्डर में कहा है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं नहीं, ये नहीं कहा. उन्होंने कहा कि इनका जो डिस्प्यूट है, मगर इधर जरा सा फर्क है. यहाँ वो कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लें, आप तस्लीम करते हैं जी हाँ इलेक्शन नहीं कराए, हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए. तो जरा सा ये फर्क हो गया. जब इलेक्शन कराने आप गए तो दूसरे लोग आ गए नॉमिनेशन पेपर दें, उन्होंने कहा जी हमें तो पार्टिसिपेट ही नहीं आपने करने दिया. ये उनका आपस में झगड़ा था कि इलेक्शन सही नहीं हुए. थोड़ा ये भी हुई है सर. हाँ, ये भी आपस में झगड़े. मेंबर्स, सो कॉल्ड मेंबर्स, जिन्हें अज्यूम करें एक सेकंड के लिए कि सो कॉल्ड लोग आ गए, उन्होंने कहा जी हमें नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए. उस झगड़े की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर यू सेइंग के whatever happened, देखिए एक होता है इसको 10 वोट नहीं पड़े, इसको 20 वोट पड़े, वो तो झगड़ा हो गया, समझ आ गया. यहाँ तो वो भी नहीं. वो कह रहे हैं आप मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं और आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है. ये आई वॉश है. पहली बात तो ये है कंटेंशन है. पहली बात तो ये है कि कंटेंशन ही है. देयर इज नो प्रूफ ऑफ दैट. वो कोई एविडेंस लेके आए, बट वुड दैट प्रूफ नॉट बी resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. I have no. देखिए ना, nor can they establish elections were not held. जी. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say no. This is elections. इसीलिए तो सर इलेक्शन पिटीशन ने ये नहीं, इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन नहीं हुए. उन्होंने कहा है कि इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपके इरेगुलरिटी थी अपॉइंटमेंट ऑफ योर इलेक्शन कमीशन. बारीकियों में चले गए. तो वो इसीलिए अगर ना लिख किया होता या हमें कहते वो कि भाई आप प्रूव करें इलेक्शन, तो हम फिर लोग ले आते 500 एविडेंस में आते कि भाई देखें उस दिन वोटिंग हुई है, उस दिन वो ये प्रोसेस हुआ है, हम अपने सारे
جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامینیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, کوئی آیا نہیں. بٹ یو نو آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point. Where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ Mr. اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں. مسٹر عمر ایوب از ناٹ اے پارٹی سیکرٹری. مسٹر اسد عمر جو ہیں سر وہ ایکچولی ہی واز ڈیٹینڈ, اینڈ آفٹر ہز ڈیٹینشن ہی کیم آؤٹ اینڈ ہی کیم آن دا ٹی وی, آن دا نیشنل ٹیلی ویژن, اینڈ ہی اناؤنس دیٹ آئی ایم resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? No, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی بھی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now. But so the point being, he was sir, the star of your party. جی Star تھے نا. Yes, he was, I think. And I mean جو بھی ان کو مجبوری ہوگی, I don't want to go into that. ان کی مجبوری نہیں, انہیں واضح طور پہ لکھ دیا کیوں میں ریزائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ نے ڈاکومنٹ فائل کیا, unless this document is not correct. نہیں, it is, ہاں it is correct. پھر انہوں نے تو ریزن دیا ہے. جی انہوں نے ریزن بتا دیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, فالوئنگ دی ایونٹس آف May 9th. انہوں نے اپنا ریزن دے کے وہ چلے گئے. بٹ یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آر ویری ویلیوبل ایسٹ آف دا نیشن. جی تو ان کو ہم ڈسفنکشنل نہیں کر سکتے سر. جسٹ بائی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہم دوسری طرح سے دیکھ رہے ہیں. جی وائی شوڈ دا ادرز لیو اینڈ ہی اسٹے. ہی مینس کیا نام ان کا؟ اسد عمر. اسد عمر. اسد عمر. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. But he opted out. He opted out. اب یہ سارے مسئلے آپ ہی کی پارٹی میں کیوں ہو رہے ہیں سر؟ بیکاز آپ دیکھیں جو ہسٹری دیکھیں, پہلے باقی پارٹی سے کچھ نہیں کہا, کسی اور نے تو نہیں کہا کہ جاگے کرو یا نہ کرو. کون سی چوزن پارٹی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے مخالفین نے کچھ کیا ہوتا تو سمجھ آتا ہے. یہ تو آپ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں, آپ کے مخالفین تو آپ کو نہیں کہہ رہے نہ کرو. ہو سکتا ہے بہت خوش ہوں الیکشن کرائے, خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسئلے کھڑے کر رہے. پھر یہ بھی بات مخالفین آپ کو کچھ مطلب elections کرائے سے. So sir, to sum up, keeping you the mind and all that. Sir, so basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. Number two, the fact is that Article 17 آپ کو میرے سے بہت کیا ہے. Article 17 کے تحت it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional اگر ہو جائے گی just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate.
It is too disproportionate election. So میں صرف sum up کر رہا ہوں. So my therefore request would be کہ also the interpretation sought کہ آپ اس کو ہمیں ٹائٹل رائٹ دے دیں اور ٹرائل کورٹ, دیٹ آلسو از ناٹ پاسبل. اگر ٹرائل کورٹ بننا ہی ہے تو پھر پوری طرح آرٹیکل 10A کو آپ فالو کریں and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. یہ الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenged like this. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دوسرا کمپلین نہیں کیا, لیکن یہاں تو آلموسٹ سو موٹو کیا. ڈسکریمنیشن 13 پارٹیز کو نے یہی ایکشن لیا, ان کے بھی خلاف نہیں کیا سر. اور اگر آپ وہ نوٹس پڑھیں جس سے آغاز کیا, اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ سب پارٹیز کو نوٹس دے رہے ہیں. سر پڑھ لیتے ہیں سر, 21 مئی کی جو نوٹس ہے پڑھ لیتے ہیں. آپ اس نے پڑھی, اس میں میں نے کہیں جی میں نے پڑھا تھا, جی میں نے پڑھا, وہ کھولے ہیں ان کا. اس میں سر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کی ارریگولیرٹیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. پلیز لیٹ اس ڈیفرینشیٹ فار اے منٹ. نہیں آپ ذرا دیکھ لیتے ہیں نا الیکشن کی نوٹس نکالیں. جی 21 مئی کی کہاں گئی نوٹس؟ اگر 21 مئی کی نوٹس پڑھ لیتے ہیں نا. مئی کا نوٹس ہے آپ کا کیا نے پیج تھا بتائیں. 398 پہ شاید پیج 398 ہے میرا خیال ہے. 398 21 میں 2022 فائنل نوٹس فار کنڈکٹ آف انٹر پارٹی. نہیں سر وہ بات کر رہے ہیں آئی تھنک جو نوٹسز باقی پارٹیز کو دیے ہیں, میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا. Directed to refer to the correspondence resting on the subject. Title دیتے ہیں discrimination کی بات کر رہا ہوں میں. Conduct of intra party elections. جی ٹھیک ہے. Attention is drawn so and so conduct. سر اگر نہ کروں میں, let me put it this way, میں نہ نہیں کروں اگر الیکشن تو پھر تو مجھے آپ پوچھ لیں کہ جی الیکشن آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا. بٹ اگر میں کرتا ہوں اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں, دیٹ از ویئر مائی پرابلم ہے. وہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں, وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی ایک ہے, میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھندناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلیں اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا. بٹ میں نے کرا لیا, آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی, یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10. یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروب کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں سے ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جوریسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون چیک کرے گا؟ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں سر. So who will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں, اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں, یہ ممبرز کا ایشو ہے, ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کر رہے ہیں. ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی, پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں, 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے, ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے, ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا, میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ کس کو کتنے ووٹ پڑے فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ, ٹھیک ہے, بابر صاحب کو 10,000 پڑے, یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی, الیکشن کمشنر نے سرٹیفائی کر دیا.
مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے. یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے کہ جی نام اپنا اگر یہ کہہ رہے ہوتے شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا. لارڈشپ چلیں اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لی ہے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت اب ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is agree 100%, we agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. Doesn't matter. Doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا. آگے جا کے نہیں. I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی. میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں. آپ کی پٹیشن کہاں تھی؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اے سمبل ٹو اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ڈس فنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say we lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability. یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave that. میں پڑھ تو لیا ہے. اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. اس میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں سر. جی اب ہم آ جاتے ہیں. ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے جس کی پیج 14 نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہوئے آپ کے. وہ کہاں کہا انہوں نے آرڈر میں؟ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا ہے نا. وہ ایسپیکٹ ہی ڈیل نہیں ہے آرڈر میں کہ وہ آپ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ this is a quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say کہ it is a void order. So الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میری انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھے. Now let us look at 15 para. Before embarking آپ کو اگر یہ پاور ہی نہیں تو آپ کو اپنی پٹیشن میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی آپ الیکشن میرے ہو گئے پھر نہ بات کرتے. وہ سمبل نہیں دے رہے تھے. نہیں تو آپ سمبل بات کرتے نا کہ مجھے سمبل چاہیے. ہم نے نہیں کہا اینڈ میں. آپ پڑھیے اپنی الیکشن آپ کی پٹیشن پیج 33 پہ آئیے. میں ذرا یہ پڑھ لوں آرڈر سے پھر میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ یہ پڑھ رہے ہیں چونکہ I don't want to leave it in between. Let me finish this. پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں؟ Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 pe aa jate hain. 18 pe. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. یہ آپ دوبارہ پڑھیے یہ جو آپ نے بھی پڑھا نا بالکل یہی کہہ رہی ہے. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. ہاں اگلا جملہ آپ نے پڑھا. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act.
So that's fine. वो ब्रिज की बात नहीं वो कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कोर्ट के इलेक्शन एक्ट के तहत जो एक्सप्रेसली लिखा है वो कर रहा है. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which सारी बातें depends jurisdiction. आप हमें बता दें jurisdiction ने लिखा है कि सिविल कोर्ट का है. जी मैं पढ़ रहा हूँ सर. नहीं बता देना कहाँ लिखा है. नहीं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए ना. जी पढ़ रहा हूँ सर. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. या म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गया यहाँ पे आके. वो आप कह रहे हैं कि jurisdiction fact है तो अथॉरिटी कर सकता है. If it exists. तो if it is तो उन्होंने आपको शो कॉज दे के एक्सरसाइज किया ना अपना जो 215 के अंदर. सर वो तो अगर आप नहीं मैं सिर्फ जजमेंट की. अब देखें जजमेंट के अंदर मुख्तलिफ पैराग्राफ हैं जो आपस में कॉन्ट्ररी हैं टू द फाइंडिंग्स ऑफ द लर्नड जजेस. With respect, it is not. डिस्ट्रक्टिव है वो. With respect, it is not. कर नहीं सकते कह रहे दूसरी तरफ कहते हैं कर सकते हैं. I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. आप पढ़ लीजिए. पढ़ लेता हूँ लेकिन वो जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. Once the authority has jurisdiction in the matter on existence of jurisdictional fact, it can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided essentially. अगेंस्ट हो गया ये. चले अगेंस्ट नहीं हुआ सर, ये लॉ है. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. कितना इसके अंदर तजाद है आप देखें ना. मुख्तलिफ जगहों पे 3-3 लाइनों में तजाद है. I think there's no तजाद and frankly ये बता this is the law. ये तो law कह रहे हैं, ये law बता रहे हैं. आपने तो नहीं लिखा. खैर you can't be responsible. नहीं but law भी बता रहे हैं. आगे चलें. ये बता दें कि इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट कहाँ ले जा सकते हैं. पढ़ते हैं सर. नहीं पढ़ते नहीं, सिर्फ बता दें वो वाला जुमला बता दें कि ये सिविल कोर्ट में जाएगी मैटर. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section 2. आप देखें वो अब इतना टाइम तो नहीं है ना. अब जरा सिर्फ अभी बता दें वो किस जगह जाए शख्स. ये जजमेंट क्योंकि चैलेंज की हुई है इसलिए आई थिंक ये बड़ा जरूरी है कि इसको हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि आप देख लें ना आगे पीछे करना है. बिल्कुल देखें आप. हो सकता है मखदूम साहब से के बाद वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे. जी ठीक है तो हम ये एक या ये कर लें. अगर आप सिर्फ यही पढ़ना चाहते हैं हमें 1-2-3 सवाल हैं. जी पहला सवाल ये है कि इस जजमेंट में इम्प्यून जजमेंट में उन्होंने ये बताया है या तो वही आर्गुमेंट रखें जो पहले ECP ने खुद लिया था कि ये तो कॉस्मेटिक कानून है. वो सुप्रीम कोर्ट ने या तो आप करें मगर आप भी मान गए कॉस्मेटिक नहीं है. ये उन्होंने कहा इनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है. अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ. इस जजमेंट में उन्होंने ये हमें बताया कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है. एक ये पॉइंट आप नोट कर लें. ये जरा देख लीजिएगा ना कहीं उन्होंने जिक्र किया इस बात का. मुझे नहीं पता, मैंने सरसरी तो बहुत सरसरी तौर पे देखा है. दूसरी बात ये है कि अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए जरा. जी ये पढ़ने के बाद सिर्फ के नहीं आप पूछ लें. नहीं हम आप देखिए आप खड़े होके पढ़ रहे हैं ना. हम मखदूम साहब को जब सुनेंगे फिर आप हमें जब ये पढ़ लेंगे पूरा फिर आप नोट कर लेता हूँ सर. जी अच्छा अब आप अपनी पिटिशन पे आ जाइए पेज 33 पे. जी पेपर बुक पे. जी ठीक है. जी इसका पैराग्राफ 2 पढ़िए. जी that in the impugned order ये वाला जी. जी थैंक यू.
that in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. पढ़ते रहे. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by Section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. अब पैराग्राफ 4 पढ़ लें. According, इसको छोड़ दूं बाकी? हाँ, वो मैं आपको कुछ और बात पे ले जाऊंगा. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide, and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void, and making PTI dysfunctional as a political Declaring party. the same void. जी. सही है ना? जी. अब आप अपनी prayer clause में आ जाइए. आपको अब contrary declaration seek करना चाहिए कि my elections were गुड प्रॉपर, जो भी लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो डिक्लेरेशन आपने कहाँ सीख किया है? I don't, my respect. आप चले गए स्ट्रेट अवे सिंबल पे जी, वो इलेक्शन से उठेगा ना बात. जहां तक मेरा, अगर आप इलेक्शन सही है तो सिंबल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. इलेक्शन नहीं हुआ या अगर इतना गलत तरीके से हुआ कि उसको तस्वुर नहीं किया जाए इलेक्शन, फिर आपको एक डिक्लेरेशन तो सीख करें ना उसका. अब आप देखें, आपने जो व्यू में पॉइंट नोटेड है, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ जल्दी से. नहीं, अभी देना चाहेंगे या मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट के छोड़ रहा था. ओके. या मखदूम साहब के बाद आप सोच के जवाब देते हैं? ठीक है. मैं देना चाहे अभी दे दें. मैं अभी भी दे देता हूँ जी, बाकी सोच भी लूंगा. दोनों कर लेता हूँ. चूज बोथ ऑप्शंस. कंकरेंट jurisdiction एक्सरसाइज करते हुए. In view of the foregoing, it is respectfully prayed, मैंने एक प्रे किया सर कि hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end. That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें, आप specifics में चले गए हैं, A, B, C, D, E, F, मगर जो primary declaration है, where I think is the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं. ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस. इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है. या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man show चले, फिर एक तरीका फर्क ही है. फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम कहें करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में. ये भी आपका मौके हो सकता है, मगर ये आप मौके ले नहीं रहे. ठीक है, तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें. फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं. तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया. सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दे या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना. मैं अभी 19 पे था सर. हाँ, नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन. ठीक है, एज योर कॉल. ठीक है सर. मैं I'll just कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ. हाँ, लास्ट पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर. आप ये पढ़ लेना पहले, फिर पढ़ लीजिएगा. नहीं, आप बाद में मौका देंगे. माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें सर. 25 पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर रहे हैं? The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम agree करते हैं. आगे बढ़िए. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of. ये jump हुआ जरा. They cannot be मेरा भी denied केस ये है. on the basis of. On the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation. अगर वो absurd है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो under challenge है ही नहीं. अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law वो उसको absurd कह रहे हैं. वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए. Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है. अभी सुनिए एक मिनट. पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है. जी.
पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी, जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें. It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका. वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो. तो 215 में तो पूरा केस चला आपका. 215 में गलत चला दिया ना सर, इन्होंने गलत चलाया. इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे. मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत 215 में तो पूरा केस है. 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेते हैं. 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो जी, तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको. सर यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव कम फुल सर्कल ऑफ आर्गुमेंट्स. My first point was, yeah, so what we do is 215 जो था section. एक सेकंड जी. We'll certainly continue hearing you. We'll take a short break. ठीक है. Because I want to attend to the other matter as well. Right, sir. And we will come back. आधे घंटे में इंशाल्लाह. ठीक है सर. ठीक है. Thank you.